I'm not sure you want to listen to this if you're an England cricket fan. Bazball. Baseball. Bazball. Bazball. Out of the picture. जब भी हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोचते हैं वी थिंक अबाउट ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, टेस्ट ऑफ द टेक्निक और सबसे ज्यादा द लेवल ऑफ पेशेंस। बट रीसेंट पास्ट में द थिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड। एक टीम ने बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स, एग्रेसिव और फियरलेस बैंड ऑफ क्रिकेट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके ये दिखा दिया है कि इट वाज नॉट अबाउट हाउ यू प्ले बट द माइंडसेट व्हाइल यू प्ले। Today in this video, we will see about a revolution in cricket. एक ऐसा change जिससे not only the way we play today, but the psychology to play test cricket might adapt altogether for the time to come. We will see about the Bazball. So jumping straight into it, let's see how it all started. From around February of 2021 to the summer of 2022, England saw some very shocking results in Test cricket. जो रूट की कैप्टेंसी के अंडर खेले गए इस टाइम पीरियड में England lost 9 matches. But what was most surprising was that they only managed to win one of the matches among the 17 played. इस humiliating performance में अपने arch rivals ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4-0 से हारने की बात नहीं थी, but also a series defeat against West Indies. And this was when England decided they needed to make some harsh decisions now. उसमें से पहला बड़ा फैसला आया जो रूट का कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करके। Huge breaking news: Joe Root has resigned as the England men's Test captain. But the team management still needed some more changes. और इसी वजह से अगला बड़ा डिसीजन लिया गया कोच क्रिस सिल्वरवुड को एक यंग एंड डायनामिक कोच ब्रेंडन मकलम से चेंज करके। To complement the coach, now they needed a dynamic captain as well. And who better than England's limited over superstar Ben Stokes could have been chosen as Root's successor. और यहीं से we started to see a new era in cricket known as Bazball. The term came after their new coach's nickname Baz and was first coined by ESPN cricket info editor Andrew Miller. इस नए approach में England has not looked back one bit and have almost dominated all their results. So what is this all about? Let's see. बहुत से लोगों को लगता है Bazball just means scoring runs quickly, but in reality we can say it's just a small part of it. Test matches में Test strike rate से खेलना is not a new thing. In fact, if we see the players जिनके Test career के strike rate आज तक सबसे ज्यादा रहे हैं, none of the current England players features in top 20. उनकी जगह we will find some players who have played cricket over a century ago and a lot more retired player names too. So बस तेज खेलना cannot be termed as Bazball. Now the question here is, what makes the Bazball so different and how is it so successful? So we can say it is not just about one player's individual stats, no matter how good or average they are, but Bazball takes into account the complete team performance. England के player अब खाली तेज strike rate से रन नहीं बना रहे, they are scoring it consistently in every situation, in every inning, in every match and as a team. अगर हम टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में देखें तो आज तक स्टीव वॉ की कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया हैड द हाईएस्ट टीम बैटिंग स्ट्राइक रेट एवर व्हिच वाज 3.66 रन्स पर ओवर। बट इंग्लैंड की ये नई साइड ब्रीचेस दैट मार्क कंफर्टेबली। दे आर करेंटली प्लेइंग विद एन इनसेन एवरेज रन रेट ऑफ 4.85। आपको बस एक एग्जांपल देने के लिए लेट्स कंसीडर अ मैच दे प्लेड इन रावलपिंडी, पाकिस्तान लास्ट ईयर। अगर उस मैच की दोनों इनिंग्स को मिला लिया जाए तो इंग्लैंड स्कोर्ड नियरली 900 रन्स एट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन रेट ऑफ 6.73। इस बात के इंपैक्ट को और समझने के लिए एक बार नजर डालते हैं इंग्लैंड बैट्समैन के स्ट्राइक रेट पे। सिंस जून 2022 इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन का कलेक्टिव स्ट्राइक रेट हैज इंक्रीज्ड बाय अ मैसिव 46%. But not only strike rate, their collective batting average has also increased by an even more unbelievable number of 76%. जहां players like Bairstow and Ben Duckett have nearly doubled or tripled their numbers from earlier. और यही mentality हम इंग्लैंड के न्यू जनरेशन प्लेयर्स में भी अब देख सकते हैं। For example, Harry Brooks debuted under the Bazball era. और अगर हम उसके stats देखेंगे, we will see how much impact this approach has created. He has an astonishing batting average of 62.15, the second best average in history after the legendary Sir Donald Bradman, with a career strike rate of just above 91. इस वजह से he also became the fastest batter ever to cross 1000 run mark in Test cricket. So baseball में ऐसा कुछ तो है which is making this English team clearly superior to others. There are two approaches here which the England side seems to be applying. पहला, selective targeting. इसके अंदर वो उन्हीं bowlers को target करते हैं which they think are more suited to their batting and then go all out on them while respecting the more threatening bowlers by playing cautiously against them. और दूसरा तरीका जिससे England have managed to increase both of their average and strike rate is something known as batting control. Batting control का मतलब एक बैट्समैन किस बॉल को कितने सही तरीके से खेल पाता है, जैसे कि edges, miss time shot या misses से बैटिंग कंट्रोल कम एक्यूरेट माने जाते हैं। वहीं बॉल को मिडिल करना या सही ढंग से लीव करना बैटिंग कंट्रोल को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। इसी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो लास्ट के 5 साल में अराउंड 70% वही टीम जीती हैं जिनका बैटिंग कंट्रोल परसेंटेज ज्यादा है। पर बेसबॉल के साथ ये कहानी पूरी उल्टी है। इवन इन मैचेस जहां उनका बैटिंग कंट्रोल दूसरी टीम से कम रहा है, दे हैव अ सुपीरियर विन रिकॉर्ड कंपेयर टू अदर टीम्स, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हायर इन फैक्ट। यानी कुछ तो ऐसी चीज थी व्हिच वाज फेवरिंग देम इवन आफ्टर हैविंग अ लोअर बैटिंग कंट्रोल स्टैट्स। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अगर ध्यान से देखें तो इंग्लैंड वाज मेकिंग द मोस्ट ऑफ डिलीवरीज दे वर इन कंट्रोल ऑफ। जहां बाकी टीम्स इन डिलीवरीज पे खाली 55 के स्ट्राइक रेट से रन बना रही थी, इंग्लैंड इज मेकिंग रन्स ऑन स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 84 फॉर द सेम। बट व्हाट अबाउट द रन्स ऑन फॉल शॉट्स? दिस इज वेयर जहां बेसबॉल की मेंटालिटी का फर्क पता चलता है। Even when England players are making false shots, वो shots defensive play में नहीं मार रहे, means they are still attacking irrespective of वो shots सही से लगे या नहीं। As a result, their scoring options on these shots considerably open up too. यही नहीं, उनके constant attacking play की वजह से opposition are forced to get in panic and pressure state, where they open the field, drop catches, make mistakes, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड की false shots के ऊपर फायदा उठाने में नाकाम हो रहे हैं। But baseball is not just about the batsman; it is also about the bowlers, the captaincy, and the team's mindset as a whole. Let's see how.
इंग्लैंड अब खाली मैचेस बचाने या ड्रॉ करने के लिए नहीं खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग टू फोर्स अ रिजल्ट, और इसी वजह से दे प्रेफर टू रिस्क इट ऑल रादर देन प्ले सेफ फॉर नो रिजल्ट। एग्जांपल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एशेज 2023 के पहले मैच में बेन स्टोक्स ने फर्स्ट डे ही इंग्लैंड की इनिंग्स को डिक्लेयर करना सही समझा। दैट वाज आल्सो व्हेन जो रूट वाज प्लेइंग आफ्टर मेकिंग अ सेंचुरी एंड वाज मेकिंग रन्स कंफर्टेबली, बट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स डिक्लेयर करने का वो एक बढ़िया टाइम था टू पुट प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया। मेनी पीपल क्वेश्चन दिस डिसीजन व्हेन इन हाइंडसाइट इंग्लैंड को वो मैच खाली 2 विकेट से हारना पड़ा, बट द टीम वाज क्लियर ऑन देयर व्यू पॉइंट। अगर फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो दे वुड डू इट विदाउट एनी रिग्रेट्स। और इसके पीछे कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, देयर बॉलर्स। बाय प्लेइंग एग्रेसिवली एंड डिक्लेयरिंग इनिंग्स अर्ली, इंग्लैंड अपने बॉलर्स को अपना जादू दिखाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर पाते हैं, एंड दे हैव नॉट डिसअपॉइंटेड एज वेल इन मैचेस दैट दे हैव प्लेड टिल 2023। 12 मैचेस की 23 इनिंग्स में देयर बॉलर्स हैव बीन एबल टू गेट द पोजीशन ऑल आउट। अगर हम इंग्लैंड के लास्ट 4 कैप्टनसी पीरियड्स को देखते हैं तो बेसबॉल एरा में देयर बॉलर्स हैव द लोएस्ट बॉलिंग एवरेज एंड इवन स्ट्राइक रेट। खाली यही नहीं, नाउ द बॉलर्स आर टेकिंग इवन फ्यूअर डिलीवरीज टू डिसमिस द बैट्समैन देन एवर बिफोर। इस चीज को बॉलिंग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझते हैं। जहां इंग्लैंड टीम की बॉलिंग का एवरेज और स्ट्राइक रेट नीचे आया है, उनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि द बॉलर्स आर नाउ नॉट अफ्रेड टू लीक रन्स फॉर टेकिंग विकेट्स, और स्टोक्स की अटैकिंग कैप्टेंसी की मदद से दे आर एबल टू फुलफिल द टास्क आल्सो। तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग, फील्डिंग और कैप्टेंसी सारे डिपार्टमेंट्स में बेसबॉल हैव ब्रॉट अ डेयरिंग अप्रोच, जिससे अभी तक इंग्लैंड हैव बेनिफिटेड हेवीली। हमने इस एग्रेसिव अप्रोच के बारे में अभी तक जितना भी देखा, वी गॉट टू नो दैट दिस रिस्क टेकिंग अप्रोच हैज बीन बेनिफिटिंग इंग्लैंड टिल नाउ। और स्टैट्स भी इस बात को प्रूव जरूर करते हैं, बट स्टैट्स और नंबर्स भी एक लिमिट तक की चीजों को बता सकते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द बेसबॉल इज रियली हियर टू स्टे। अगर हम उनकी अब तक की सबसे टफ सीरीज में से एक की बात करें तो वो थी ऑस्ट्रेलिया के सामने एशेज की होम सीरीज। अब भले ही वो सीरीज जीतने में नाकाम रहे हों, एज द स्कोर स्टूड ऑन 2-2 बाय द एंड ऑफ द सीरीज, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सीरीज प्लेड इन रीसेंट टाइम्स। पहले 2 मैचेस में बहुत ही क्लोज लॉसेस झेलने के बाद एनी अदर टीम माइट हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, बट नॉट दिस न्यू इंग्लैंड। सीरीज के तीसरे मैच में अपने इसी कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए दे पुट अप अ ग्रेट फाइट बैक टू विन दैट मैच। और अगर इसी का अगला मैच बारिश के रीजन से ड्रॉ नहीं हुआ होता, इंग्लैंड कुड एक्चुअली हैव वन द ट्रॉफी, क्योंकि उन्होंने 5th मैच भी अपने जज्बे के साथ जीत लिया था। सो दो ऑस्ट्रेलिया रिटेन द but the only thing that was talked about was England's comeback and never to give up approach. मगर वहीं अगर हम उनकी एक और ऑनगोइंग और सबसे मुश्किल सीरीज पर नजर डालें तो द स्कोर्स टेल समथिंग एल्स। एज ऑफ द 4th टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड द सीरीज 3-1। पहले मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के पास एक अच्छा मौका था इस इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन साइड को सीरीज हराने का, बट दे फेल्ड इन दैट। देयर सीनियर बैट्समैन लाइक जो रूट आर इवन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्लेइंग एग्रेसिवली एंड थ्रोइंग हिज विकेट्स ऑन दिस टूर। अब स्कोरलाइन को देखते हुए पीपल कैन से दैट बेसबॉल हैज फेल्ड इन इंडिया। Don't use baseball as a cop-out. It's all nice to say, okay, this is the way I bat. You can't bat all the time. You have to hold back. But in reality, this series has already been more competitive than the last time England toured India. और यही चीज बेसबॉल को खास बनाती है, to play their brand of cricket without caring for the results. Like every coin with 2 sides, बेसबॉल में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं, and more than often it has been impactful for England. और इसी impact को नजर में रखते हुए many of the teams now seem to be trying this approach. India recently smashed the record for fastest team 100 in Test matches जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 रन का मार्क खाली 12.2 ओवर में पार कर लिया था। Even Pakistan showed examples of the same approach in their tour of Sri Lanka. तो हम देख सकते हैं if a team is able to influence other team playing styles, there is definitely something special about it. अब देखना ये होगा how England take forward this fierce style of play that has reaped them so many brittle results already. पर जो भी हो, Brendon McCullum and Ben Stokes have scripted a new chapter in England, या कहें तो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। अगर बाकी टीम्स भी इस मेथड को इंप्लीमेंट करने लग जाएंगी, we could witness a proper revolution. तो एक बात तो पक्की है, the entertainment is guaranteed and we are ready with the best seats in the house.